परम मंगलमय भगवान नंद नंदन बालकृष्णनी वांग्मय स्वरूप शब्दमय स्वरूप एवी भागवत भगवानना चरणों वंदन। जेना खोळामां बेसी आज आ 5-5 दिवसथी भगवान ने ज्ञान गंगा ने गाई रह्या छीए एवा दादा वैद्यनाथ अने दादा भीड़भंजनना चरणों वंदन। विघ्नवृंद सारस्वत वृंद सज्जन महापुरुषों चरणों वंदन साथे श्रद्धा ने भक्तिमय माताओं चरणों वंदन साथे आजना 5मा दिवसनी भगवाननी आ दिव्य लीलाओने आपणे सौ भेगा मळी अने भावथी आजे आ 5मा दिवसनी ज्ञान गंगामां आपणे बधा डूबकी लगावी अने ज्यारे श्रोता अने भक्ता बंने भेगा थई अने ज्यारे मात्र उद्देश्य भगवान राखे बीजो कोई उद्देश्य न होय खाली मात्र ने मात्र ज्यारे ईश्वर होय त्यारे केनारा ने सांभळनार बंने ने ए भगवान भक्ति नो अनुभव थतो होय। अने खरेखर आनंद त्यारे ज आवे तमने जीवन में कि ज्यारे बेनो एक रस होय। हवे श्रोताओ कदाच मानी लो के नाचवा कूदवाना शौकीन होय, कथाकार कथा कहेवानो रसिक होय, तो ना कथा कहेवामां कथाकार ने मजा आवे ना श्रोताओ ने सांभळवामां मजा आवे कि महाराज तो नचावता ज नथी। हवे कथाकार ने एवुं होय कि हूँ कथा सरस खूब भावथी पीरसूं, पण हवे श्रोताओनो भाव नाचवानो होय अने कथाकारनो भाव कथा कहेवानो होय। बंने पोतानी जग्याए साचा छे पण विरोधाभास थाय एटले ना तो कथाकारने कथा करवानी मजा आवे ना श्रोताओने कथा सांभळवानी मजा आवे। तो ज्यारे श्रोता अने भक्ता बंनेना ज्यारे भाव भेगा थाय त्यारे आ कथानो आनंद आवे। એટલે શ્રોતા અને ભક્તા બંનેનું કેન્દ્ર બિંદુ આપણા બંનેનું બિંદુ એક જ છે ભગવાન। આ કળિયુગમાં આપણે આવ્યા છીએ તો આ કળિયુગમાં એવું કયું સાધન કરીએ કે જેના થકી આપણને આપણા જીવનમાંથી દરેક ક્લેશ કંકાસ દૂર થઈ આપણા જીવનમાં એક આનંદ આવે, अपना जीवन में एक सुख अनुभवाय। तो एनो एक ज माध्यम बतायो भगवान। भगवान वगर क्यारे पण कोईने पण सपना में पण सुख नथी। एटला माटे ज भगवान महादेव भोळानाथ मां जगदंबा पार्वती ने कहे छे उमा कहु अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हे मां पार्वती, हे पार्वती आ जगत छे ने जगत सपना जेवुं छे अने भगवाननी भक्ति ए साची छे एमां कोई संदेह नथी। અને આ વાત જ્યારે કોઈ દેવોનો પણ દેવ મહાદેવ કહેતો હોય ત્યારે ખોટી ન હોય। તો આજે 4 દિવસ થઈ ગયા, 5મો દિવસ આજે આપણે પ્રારંભ કરીએ છીએ અને મને તો ઘરે ઘરે એવું લાગે છે કે મેં કાલે જ કથા ચાલુ કરીને આજે બીજો જ દિવસ થાય એવું લાગે મને। આજે તો એવું લાગે છે હા કે હજુ કાલે જ ચાલુ કરી છે ને આજે બીજો જ દિવસ છે। મને એવું લાગે, મને નથી લાગ્યું 4 દિવસ થયા એમ।
કે હું 4 દિવસથી આપ બધાને આપણે બધા ભેગા થઈને કથા સાંભળીએ છીએ અને ગાઈએ છીએ. હા, એટલા માટે જ કહ્યું છે કે જીવનમાં જ્યારે સુખનો સમય આવે ને, આનંદનો સમય આવે ને, ત્યારે સાહેબ આ સમય ક્યારે નીકળી જાય ને ક્યારે સરકી જાય આપણને ખબર પડતી. હા,